Hello everyone, let's start the another method for division, that is the flag and pole method. बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, जैसा इसका नाम है, that is flag and pole method. Let's see what is the flag and pole. Now you can see here we have two examples, that is 848 divided by 31. सबसे पहले आपको 31 को बनाना है flag and pole में. कैसे? Let's see. 31, we can write this 31 like this. So this is our flag and this is our pole. Next, यहाँ पर आपका जो डिवाइजर का काम करेगा वो करेगा पोल, which is 3. तो मीन्स आपको यहाँ पर डिवाइजर ऐसे 3 समझना है. You can see divisor is 1 digit, so we can split this number by 1. So write the number, that is 848, and split this number by 1. Now 31, we can write this number like this. What is the next step? सबसे पहले आपको डिवाइजर which is pole, that is 3, डिवाइड करना है 8 को with divisor. When we divide this 8, that is the first digit, आपको सिर्फ first digit लेना है यहाँ पर, which is 8. When we divide this 8 by 3, we get quotient, that is 2, and we get remainder, that is 2. That is 3 2s are 6 and remainder is also 2. So आपको मेथड वही रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन इसमें हल्का सा चेंज है कि आपको इन क्वोशिएंट और रिमाइंडर को राइट कैसे करना है. So let's see. Quotient 2 we can write here and remainder is 2. We can write this remainder before the next digit, that is 4, but here. But आपको consider इस नंबर को, that is 2 and 4, consider आप इसको 24 ही करोगे, जैसा कि फ्लैग एंड पोल में मेथड में है. तो ये नंबर आपका 24 है, ये क्वेश्चन आपका 2 है. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अभी आपके पास जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज 24. जैसा कि हमने 31 को स्प्लिट किया आपस में फ्लैग और पोल में, ऐसे ही आपको हर नंबर्स को इसी टाइप से लिखना है, दैट इज फ्लैग एंड पोल के टाइप से. लेकिन आपको कंसीडर करना है वो नंबर प्रॉपरली, दैट इज 24. Now our next step is 24 minus flag, multiplication with flag and previous quotient, that PQ, that is the previous quotient. Now 24, which is here flag, is 1 and previous quotient is 2. So we can subtract 24 minus 2, that is 22. Now we can divide this 22 with pole. What is quotient? Quotient is 3 7s are 21 and remainder is 1. So now our quotient is 7, our remainder is 1. So which we can write to the previous, which we can write before the next number. Now it will become 18. तो आपको करना क्या है? 18, so we can write this number 18 minus, that is previous quotient and flag 1. So 18 minus 7 we got 11. और जब आप 11 को पोल से which is 3 डिवाइड करेंगे तो we will get 3 3s are 9, 3 quotient and 2 is our remainder. This is 2. अभी आप इस मेथड का आपको फायदा क्या है? क्योंकि आप डेसिमल्स के बाद जितने पॉइंट्स, जितने नंबर चाहते हैं, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं. कैसे? You can write 0 after that. That means you can read this as 20. So our first step is 20 minus, that is the previous number, quotient is 3 and flag is 1. 20 minus 3, that is 17. And when we divide 17 with 3, we get quotient is 5 and our remainder is 2. So we can write here 5 and remainder here 2. That means अगर आप चाहते हैं तो आप डेसिमल्स के बाद 3, 4, 5, 6 जितने भी पॉइंट्स चाहते हैं you can find out. तो उसके लिए आपको कोई कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, क्योंकि आपके सामने आ चुका है अभी फ्लैग एंड पोल मेथड. सो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? 27.35. So our answer is, you can put here decimal, so this is our answer, 37.5, 37.35. So this is our answer.
अगर आप चाहते हैं तो डेसिमल्स के बाद आप अगर और भी पॉइंट आप ले सकते हैं. So let's see one more example here. You can see 97,662 and divide by 83. देखिए 83 which is divisor is a very big number और जिससे आप easily divide नहीं कर सकते किसी भी simple method से. लेकिन with the help of this method, that is a flag and pole method, you can easily divide any number by 83, 97, 46. और विद द एक्यूरेट आंसर मीन्स आपको डेसिमल्स के बाद के पॉइंट भी एग्जैक्टली मिलेंगे. तो है ना इंटरेस्टिंग मेथड. सो फर्स्ट राइट द नंबर एज इट इज, देन वी कैन राइट दिस 83 एज ए फ्लैग एंड पोल मेथड. दैट इज 8 and 3. दिस इज आवर फ्लैग एंड दिस इज आवर पोल. We know that pole works like a divisor. So first take the first digit, that is 9, and first step split this number by 1. When we divide 9 by 8, we get quotient is 1 and remainder is 1. So we can write here 1 and 1 here. So now this is 17. So what is the next step? Next step is 17 minus multiplication flag with previous quotient, that is 1. 17 minus 3 we get 14. और जब आप 14 को 8 से डिवाइड करेंगे we will get 18. 8 ones are quotient is 1 and remainder is 6. So we can write here 1 and 6 here. So our next number is 66. Process will be same. 66 minus multiplication of 1 with flag, that is 66 minus 3 is 63. When we divide this 63 by 8, we get 7 quotient, that is 8 sevens are 56 and 7 remainder. So we can put here 7. Our next number is 76. Process will be same, that is 76. 76 minus multiplication 7 with flag, that is 7 3s are 21. When we subtract 21 from 76, we get 55, and when we divide this 55 by 8, we get quotient, that is 6, 48. 8 6 are 48, that is 6 is our quotient and 7 is again we get remainder. So we can put here 7. Now what is the next step is 72 minus multiplication with the previous quotient, which is 6 with flag, that is 3. Now 72 6 3s are 18. Now when we subtract 18 from 72, what will we get? We get 54. Now 54 divide by 8. Our quotient is 6 and remainder is again 6. Now put this quotient is here and remainder here. So we can put here 0 because अगर आपको डेसिमल्स के बाद 2-3 पॉइंट्स चाहिए तो आपको इस नंबर को आगे तक बढ़ाना है by applying to 0. So now 60 is again number and 60 minus 6 multiplication with 3, that is 18. 60 minus 18, what will we get? We get 42. 42 divided by 8, that is 8 5s are 40 quotient and remainder is 2. So we can put here 5 and remainder you can put as your wish कि आपको डेसिमल्स के बाद कितने पॉइंट चाहिए. तो ये है आपका आंसर, दैट मीन्स 1176.65. इस लाइन का मतलब ही है पॉइंट. सो दिस इज आवर आंसर. This is our answer when we divide this 5-digit number by 83. तो देखा आपने कि 83 which is a very big number, 83 से भी आपने कितनी easily डिवाइड किया है और विद द प्रॉपर आंसर मीन्स आपको डेसिमल्स के बाद के डिजिट भी मिल चुके हैं. I hope you understood this trick. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.